Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Function of poetry is the last item in Wordsworth's theory of poetry, as discussed in Preface to Lyrical Ballads. And this is the fifth item in his theory of poetry. The function of poetry, as this heading tells you, according to Wordsworth, is to give pleasure. Simply said, it is pleasure which is important for Wordsworth as far as the function of poetry is concerned, and the poet is obliged to give pleasure. This is the most important thing for writing poetry. His words are these. He says, the poet writes under one restriction only. There is one important thing, important restriction under which the poet writes, namely, that is, that of the necessity of giving immediate pleasure to a human. The poet writes under one compulsion, under one important thing, and that important thing is to give immediate and quick pleasure to the human. So these are his words for telling us that the main function of poetry is, or the poet, is to give pleasure. This was not the idea of the 18th century neoclassical poets. The 18th century neoclassical poets believed that the function of poetry and poets is to instruct and delight. That is, delightful instructions. Now we can see that the emphasis is on instructions. When you say delightful instruction, the emphasis falls on instructions. So instruction were important then, but for Wordsworth, it is the pleasure which is most important. The neoclassical thought that the poet is a teacher. He is a responsible person, and the function of poetry is to give you a better society because he teaches and his teaching is delightful. So, if someone says that the purpose of poetry or the poet is not teaching, but it is to give pleasure, it might look a kind of degradation to the function of poetry and to the function of poets. But Wordsworth explains. He says, all the healthy activities are accompanied by pleasure. When you do something good, something healthy, that healthy activity is accompanied with pleasure. For example, if you sympathize with someone, if you help someone, then you yourself feel pleasure. So, sympathizing with someone, which is a healthy activity, gives pleasure to us. In the same way, poetry is a healthy activity and it gives pleasure too. There is no degradation in saying that poetry gives you pleasure. Wordsworth's words are these. He says, we have no sympathy but what is propagated by pleasure. That uh, when we sympathize with someone, then actually what we are propagating is pleasure. That is, sympathy is combined with pleasure. Wherever we sympathize with pain, it will be found that sympathy is produced. So if there is some pain, somebody is feeling pain, you sympathize with him, you yourself will also feel the pleasure of sympathizing with the others and carried on by subtle combinations with pleasure. So there is a combination of sympathy with pleasure, and these two are combined. So he explains it in this way that it is no degradation of the function of poetry. Then he also tells us that acquiring knowledge also gives pleasure to us when we try to read a story and get some knowledge from it, or let's say a scientist does something
uh, develops something, he feels pleasure in acquiring that knowledge of that thing. Even painful things, if they are related with getting knowledge, also gives pleasure. For example, if there is a surgeon and he is performing an operation on a patient, after the operation, he feels pleasure because of the increase in his knowledge, because of doing something good. He feels great. So poetry takes us to the heart of reality and sympathy. Poetry um, is something which makes us uh, happy, and with happiness, we know that this happiness is joined with sympathy, with reality, with all the good and healthy activities. Science deals with particulars, philosophy deals with precepts, as we have already done. But poetry gives you particular, that is people, characters, and also precepts, that is directions, and we learn a lot from it. So poetry is better. This these were the two topics. Actually, one, that poetry gives you pleasure. This is the function of poetry, and this function is not the degradation of the function of poetry. इसको अब जरा उर्दू में भी सुन लें. हमने बात की है कि जो फंक्शन ऑफ पोइट्री है, ये फिफ्थ पार्ट है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री का, और फंक्शन के बारे में वो हमें कहता है कि पोइट और पोइट्री का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो रीडर को प्लेजर दे और खुशी दे. उसके जो अपने अल्फाज है वो ये हैं कि द पोइट राइट्स अंडर वन रिस्ट्रिक्शन ओनली. शायर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर लिखता है, उसका एक काम है, नेमली यानी दैट ऑफ द नेसेसिटी ऑफ गिविंग इमीडिएट प्लेजर. उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक इमीडिएट खुशी दे टू ए ह्यूमन बीइंग को. अब ये जो खुशी वाला फंक्शन है 18th सेंचुरी में कतई नहीं था. न्यू क्लासिक्स का ख्याल ये था कि पोइट जो है ये टीचर है, पोइट्री का काम है इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, या इसको वो कहते थे डिलाइटफुल इंस्ट्रक्शन. लेकिन क्या कहते हैं, डिलाइटफुल इंस्ट्रक्शन तो जोर इंस्ट्रक्शन पर ही पाया जाता है. तो ये अगर कहा जाए कि पोइट टीचर नहीं है बल्कि वो तो लोगों को खुशी देने वाला शख्स है, या पोइट्री खुशी देने वाली चीज़ है, तो ये डिग्रेडेशन लोग समझ सकते हैं. तो वो इसकी वजाहत करता है कि नहीं, ऐसा नहीं. तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ प्लेजर अटैच होती है. पोइट्री भी हेल्दी एक्टिविटी है, इसके साथ भी अटैच होती है. और जब भी हम किसी से सिंपथाइज करते हैं, हमदर्दी करते हैं, तो हम खुद भी प्लेजर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं. अगर हम किसी की हेल्प करते हैं जो कि प्लेजर, जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, तो हम खुद भी खुश होते हैं. वर्ड्सवर्थ के अल्फाज ये हैं, वी हैव नो सिंपैथी बट व्हाट इज प्रोपेगेटेड बाय प्लेजर. सिंपैथी जो है इसके साथ प्लेजर अटैच होता है. सिंपैथी इसीलिए तो फैलती है, प्रोपेगेट होती है, क्योंकि आप सिंपथाइज करके खुश होते हैं. Wherever we sympathize with pain, it will be found that sympathy is produced. जब भी आप किसी दर्दमंद आदमी के साथ सिंपथाइज करते हैं, हमदर्दी करते हैं, तो खुशी प्रोड्यूस होती है. एंड कैरीड ऑन बाय सटल कॉम्बिनेशंस विद प्लेजर, और इसकी कॉम्बिनेशन होती है प्लेजर के साथ. वो मजीद वजाहत करता है कि देखें, नॉलेज की एक्विजिशन, नॉलेज को सीखना, ये भी हेल्दी एक्टिविटी है, ये भी प्लेजर के साथ अटैच है. और यहाँ तक कि पेनफुल चीज़ों का नॉलेज भी हमें खुशी देता है. अगर हम ट्रेजिडी के बारे में सीखते हैं तो ट्रेजिडी तो पेनफुल चीज़ है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं हम प्लेजर महसूस करते हैं. कोई सर्जन अगर ऑपरेशन करता है, उसका नॉलेज इंक्रीज होता है, दूसरे को फ़ायदा होता है, तो इस वजह से
उसको भी खुशी मिलती है। तो पोइट्री जो है ये भी खुशी देती है, क्योंकि ये एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। और पोइट्री हमने तो पहले ही साबित कर दिया है, ये साइंस से भी बेहतर है, हिस्ट्री से भी बेहतर है, ये पर्टिकुलर्स की बात करता है, फिलोसफी से भी बेहतर है, ये प्रिसेप्ट की बात करता है। पोइट्री तो दोनों को कंबाइन करता है, लिहाजा ये जो पोइट्री है ये बेहतर है और इसका मेन पर्पस ये प्लेजर ही देना है। पोइट्री, though its basic purpose is pleasure, to give pleasure, however, its uh, side benefit is the purifying effect of poetry. The good influence of poetry is also there, though it is unintentional, because the intentional purpose is that of giving pleasure. But that purifying effect of poetry is a kind of good effect, side effect of poetry, though it is not intentional, but it is good. And we know that we have the same spirit which goes through the universe and through the natural objects and through other people. And as a result, we have a connection. We have a network of relationship with each other. We have the relationship of love with each other because we have the same spirit which God has, which nature has, which other human beings have, and as a result, we are attached with each other. So, with the help of writing, the poet takes this relationship and this love to all the readers, and love is created in the reader. This is that purifying influence of poetry. The effect of poetry is to create an enlarged sympathy, because that sympathy is possible only when we talk about the spirit which attaches us all together. Um, we, God, the people, natural objects, we are attached in just one web work or network. So poetry binds us together. Poetry binds us with the help of knowledge and sympathy. The vast empire of human beings, all the human beings are attached with each other. Now you see, this is a moral function. Though Wordsworth never intends to give moral function to poetry, but he says this is an extra function of purifying people, giving them moral function, giving it moral function, and giving people something good. This purpose is fulfilled automatically without intentionally doing anything. तो ये नेक्स्ट जो पर्पस है ये प्यूरिफाइंग इफेक्ट है, सफाई का इफेक्ट है, लोगों को साफ करना, लोगों के दिलों को मोहब्बत से भरना। ये इफेक्ट पोएट्री में मौजूद है। अगरचे इसका मेन फंक्शन तो वही है, टू गिव प्लेजर, लेकिन इसका एक साइड अच्छा इफेक्ट ये भी है कि ये लोगों में हमदर्दी पैदा करता है, और हमदर्दी पैदा करने की वजह ये है कि पोएट इस रिलेशनशिप को और इस लव को हर जगह पहुंचाता है। हमें पता है उसका आइडिया ये है कि जो लोग हैं इनमें जो स्पिरिट है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जो स्पिरिट है और गॉड की जो स्पिरिट है ये एक है, तो हम एक दूसरे के साथ अटैच, हम एक दूसरे के साथ सिंपैथी भी इसी वजह से रखते हैं, लव भी इसी वजह से रखते हैं, और पोएट इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है और ये इकट्ठा करता है, बाइंड करता है तमाम ह्यूमन बींग्स को टुगेदर। अब लोगों को इकट्ठा करना और सिंपैथी पैदा करना एक मॉरल फंक्शन है। और वर्ड्सवर्थ ने ये नहीं कहता कि हम कि पोइट्री का मेन मकसद मॉरल है, मेन मकसद तो वही है, लेकिन एक साइड मकसद जो कि ऑटोमेटिक हल हो जाता है, और वो ये फंक्शन भी है कि ये लोगों में मोहब्बत पैदा करे, भाईचारा पैदा करे, और ये फंक्शन ऑटोमेटिक होता है, ये राइटर कसदन करता भी नहीं। तो ये एक मैंने कहा ये आखिरी आइटम है
تھیوری آف پوئٹری کا، لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. جو لاسٹ آئٹم ہے وہ لینگویج آف پوئٹری ہے، جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. So that's all for now. Thank you and good night.